This time it's not limited to Madhya Pradesh. The rot runs deep, stretching across Rajasthan, Haryana, Uttar Pradesh, Indore, Warangal and Visakhapatnam. Plan by plan, the BJP is hell-bent in destroying the future of the youth. As I've just said, that they are least concerned about the future of our students. First, they engineered Vyapam scam as a pilot in Madhya Pradesh. Then they drowned our youth into the paper leak, recruitment scams across the nation. Now they moved one step ahead, created fake medical college to dupe our youth. Now how they have done, systematically we're going to explain that to you. The modus operandi of these scams was granting NMC recognition to fake medical colleges by forging, fabricating compliances. You know, when there's an inspection committee, when they come and when they don't find things appropriate, they give you a compliance that you need to fulfill these shortcomings to get the recognition certificate. So they forged and fabricated the compliance using ghost faculty, fake patients, cloned fingerprints and tampered biometric system to pass the inspection and secure approval. Just imagine the plight of these medical colleges which were not equipped to be granted permission. They were granted permission through these kind of methods that the medical colleges used. Prime Minister Narendra Modi and BJP's President J.P. Nadda ji, who also happens to be the Union Health Minister, stands accountable for this massive scam. A nationwide medical scam is unfolding right under his nose. After all, it is his ministry which he handles. This is a clear case of gross negligence and systematic corruption. Is there no mechanism to check on what basis these recognitions were granted? But well, these have been exposed, and how they've been exposed, I will just, in detail now say it out to you. The National Medical Commission NMC scam. Various media reports highlight that more than 40 medical colleges across the country may have obtained recognition through bribery, falsified records, and manipulated inspections. Investigators believe that bribes ranging, can you imagine the bribe that were given to these officers? They were about 3 to 5 crores, were taken from private institutions across the country to guarantee NMC recognition regardless of the merit and infrastructure. And I think it's very visible when you see this medical college sometimes. If you happen to even visit there, you'll see there's gross negligence, there's nothing. But still, it's, it's aghast to see that they have got recognition. The story begins inside Union Health Ministry itself, where officials including, we'll name them, Poonam Meena, Piyush Malayan, Chandan Kumar and others, allegedly accessed and shared sensitive files related to medical college approvals. Now these are the people who got an access to the inspection done, and how then they misuse it is what we are going to tell you. These documents containing internal notings, if you're aware of the inspection, that the inspectors make certain notings, and that's a private affair, that's not been told to anybody. That's what they see, they find, and they make a noting, and then it's sent to the NMC for further approval. The documents containing internal notings, inspection schedules, accessors' identities were secretly photographed and transmitted via mobile devices to private agents working for medical colleges across the country, all in exchange of cash. Now this is how they used to get the access to the inspector's report, and then these agents will further pass it on, but there was a cost tagged to it.
This illegal early access allowed colleges to stage inspection with ghost faculties. Obviously, if you know that these are your faults and this is where you're lacking, you prepare it in an illegal format, and that's how they did it. What they did was they got hold of ghost faculties, proxy patients, because they knew inspection is going to be around the corner. They'll send to the villages, get a hold of people, make them as patient, lie them in the hospital beds, and pretend that it's mandatory actually to have these kind of patients to run such kind of colleges. So the proxy patients were there, and falsified biometric attendance. Since it has been mandatory to have biometric attendance, that was also forged, and falsified attendance were given, to get the approval, thereby securing favorable reports from NMC. Inspection teams were routinely bribed, and in some cases, officials even helped colleges. Just imagine, the officers were also helping the colleges to forge the documents and fake qualifications to devise, to get the regulation done from these officers. Just imagine your children studying in such colleges where there were no access and there were no facilities. It's all fake and in all paper. And then audacity of these colleges to even teach the students. What kind of doctors or what kind of medical practitioners are we putting forward? At the center of the scandal is Dr. Jitu Lal Meena, then a whole-time member of the NMC Medical Assessment and Rating Board, the MARB, who reportedly received crores in bribes delivered through Hawala channels and intermediaries like Dr. Virendra Kumar and Shivam Pandey. So obviously the person insider was the person who was helping these colleges get the approval with crores of bribes. To be noted here is Dr. Meena began his career as a doctor at a rural primary health center in Gujarat. His rise to a prominent position in NMC move up from the PHC to state level. He was reportedly facilitated by none less than Shri Narendra Modi ji when he was the Gujarat CM. So now you can see the connection as how people are raised from file to ranks, and then how they distort the medical system of a country. Modi ji helped Meena move up from the PHC to state level. In 2018, Meena was brought to Delhi to help implement the Ayushman Bharat scheme, and was later appointed as a member of NMC. Meena now becomes the reported mastermind in the huge scam. From being a primary rural health care center to what he is today is how the nexus has been unfolded. The FIR further noted that Dr. Meena has been constructing a Hanuman temple at Sawai Madhopur, Rajasthan, again using illicit funds. The construction cost approximately 75 lakhs was allegedly paid to contractor via Hawala channels using the bribe that he had collected. Among the implicated institutions, now we are going to name the institution which have been implicated under these scanners that has been highlighted, are the Index Medical College in Indore, which stands out, and Chairman Suresh Badoria was reportedly involved in serious fraud, including employing temporary doctors. I mean, I don't know whether you've heard of these things or not, but this is what has been happening right under the nose of the health ministry. Employing temporary doctors while falsely listing them as permanent faculty. Most of the time we see doctors having their own clinics, but and of course they earn better there than what they are in profession of education, but they are taken there from them temporarily, while parallelly they are running their own institution and they are running their own medical clinics, and then they are brought to the colleges, shown as permanent members,
I mean, a same person getting a job in a college whereas running his own institution and being shown as regular. The college allegedly used cloned fingerprints to fake biometric attendance. Bhadoria also is accused of issuing fake degrees and certificates. To this level they can scoop, and then if they think they can get away, I think the people of our country will not permit this to happen. Several colleges across India benefited from this scheme, including Swaminarayan Institute of Medical Sciences and Research, Gujarat, NCR Institute of Medical Science, Meerut, Uttar Pradesh, and Shamlal Chandrasekhar Medical College, Bihar, to name a few. One particularly notable case involved in Rawatpura Sarkar Institute of Medical Science in Raipur, led by a godman, Ravi Shankar Maharaj, often referred to as Baba, close to the BJP power. There are many more, but this is very significant. There are allegations that his trust received undue favors in government schemes, road access projects, and electricity subsidies. According to the FIR, his team, including Director Atul Kumar Tiwari, bribed Mayur Rawal to obtain advance information. As I said, that's how the colleges were able to get permission, because they knew what was the shortcomings and how falsely they could manage and get their fake doctors online or false attendance. That's how this to manipulate the inspection process. The FIR by CBI on 30th June 2025 has named 35 individuals, including officials from the Union Health Ministry, the National Medical Commission, intermediaries, private medical colleges, representatives, and even a self-styled godman. But it scrupulously misses the name of Union Home Minister J.P. Naddaji, which I'm sure should be held accountable for such a massive scam under his helm. Apart from the National Medical Commission scam, there is Pharmacy Council of India, as you know, is also under the scanner, and this is a scam that has been reported. It's a welcome change that instead of hounding the opposition leader, which is a regular feature of the BJP and the investigating the agencies, to perpetually, blame the opposition for all the negativity. But here, it's a welcome change that instead of hounding the opposition leader, the CBI, after a long time, is investigating a real scam under the BJP. A second damning FIR by CBI has exposed how a massive corruption is rotting the very heart of India's medical education system. According to CBI FIR filed on 30th June 2025, a separate case involving the Pharmacy Council of India has come to light. The FIR accuses Dr. Montu Patel, the PCI president, of turning the regulatory body into a private club, to such an extent that if you are the president of the association, you just make it your own, merry gang into it, and then get away with all the corruption. So the Montu Patel, the PCI president, he turned the regulatory body into a private club driven by favoritism, bribe, and political manipulation. Dr. Patel has been running a racket granting recognition to pharma colleges in exchange of bribe. It's the same nexus that runs. Once you're made the president, you have your, all the freehold with no checks and balance, and just giving regulation without even verifying the fact whether these colleges even have the capacity to run such courses. In total, the CBI found 23 such colleges across Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat, and Rajasthan that were approved during Patel's tenure despite failing to meet the prescribed forms and infrastructure standards.
specifically 6 colleges, and I'm going to name them: the SSD College of Pharmacy, Gagan College of Pharmacy, Shanti Devi Jain Degree College, Veer Shivaji College of Pharmacy, Bhagwati College of Pharmacy, and they're all in Uttar Pradesh. And then comes the Hayward College of Pharmacy, Madhya Pradesh, were approved by the executive committee headed by Dr. Patel despite negative inspection report. I mean, how blatant can that be? When you know the reports are not favorable despite the fact, and still you're playing with the future of this country, with the future of the students, and what kind of doctors and pharmaceutical specialists are we going to bring across? And that is why you see the pathetic condition of our hospitals, but the doctors are not even trained, but they still have a degree. One shocking example: a college in Ayodhya run by Vinod Kumar Tiwari was approved even after inspection found, can you believe what they found? No building, no faculty, and no students. Despite that, this college run by Vinod Kumar Tiwari was approved. Tiwari allegedly paid 10 lakhs in cash and 95,000 via bank transfers to Santosh Kumar Jha, a primary school teacher, to manage the fake approvals. The CBI later found the campus in ruins, but obvious, there was nothing there. And then you have the audacity to give approval to a college, yet the PCI gave it approval to run D-Pharma courses. The FIR also noted irregularities in PCI election. Now here is where nexus comes in. Not only were they giving approvals at their whims and fancies, but look what they did with the executive committee also. Before the election, Dr. Patel booked luxury hotel rooms at the Connaught Hotel in Delhi for himself and 12 other council members. Now that's how they used to book these luxurious hotels, stay there and do all the illegal activities. He spent over 2.11 lakhs on stay, food and comfort. Doing what? Buying influence with hospitality. Once elected on April 6, 2022, Dr. Patel co-opted members into key committees. Obviously, when you're the president, you can, vote and select your members, but there is a pattern. But despite that, he co-opted members into key committees without legal basis and gave full ear powers to 6 hand-picked people to approve pharmacy colleges. He bypassed council rules, didn't seek voting or discussion, and centralized control into his inner circle. By 2023, the system of physical, now this is also a very important issue, ladies and gentlemen, please pay note to this, that by 2023, there was a system of physical inspection. Obviously, when you are inspecting college, you need to be there physically to see whether there is a faculty present there or not, whether the building or the infrastructure is equipped enough to run certain courses. There are guidelines when you have to run a pharma college or a dental college or a medical college. There are certain rules and regulations laid by the DCI or the NMC. And it's a difficult task to actually adhere to those rules and regulations. So if you're not physically verifying it, how can you grant permission? Well, by 2023, please note, ladies and gentlemen, the system of physical inspection of college was scrapped. Under Dr. Patel, the PCI shifted to online Zoom inspection. How can you do inspection online on a Zoom meeting? And can you believe how long it lasted? It only lasted 7 to 9 minutes. An inspection which was to give approval to a B Pharma college to run a B Pharma course or pharmacy course,
was changed from physical inspection to online inspection, which lasted 7 to 9 minutes. Inspectors could not verify the infrastructure or faculty. Colleges were approved without any proper checking. So this is how low they could have scooped with the future of our young students, whom we say are the future of this country. Reports highlight that applications were invited through a Google link from April 24 to May 5th, 2023. A total of 908 applications were received, and 870 of these were shortlisted for online inspection. Even worse, the approval software system, the DG Pharma, meant to track applications, was tampered with. The system, which actually is supposed to be foolproof, was tampered. On October 14, 2022, access was secretly blocked for PCI officers. Now, if you're having officers, each one has an access to see what kind of inspections taking place and whether to give approval or not. But this was secretly blocked. This was done while the project was still incomplete and not officially handed over. Without any notice or training, Patel's team took over the system, silencing all internal checks. So this is how the scam has been highlighted, and there are very important pertinent questions. I hope you people will be sincere enough to ask this question to the BJP, and the important questions are: who will take responsibility when a person close to the Prime Minister, Modi, is named at the center of the scandal? Is the Prime Minister aware of this individual involvement? That's the first question. The second question: why is the BJP President and Union Health Minister JP Nadda is not held accountable for multi-crore bribery scheme unfolding right under his nose within his own ministry? Was the Union Health Minister unaware of the scale of these scams or silently complicit? How could such a widespread manipulation of inspectors, approvals, biometric system happen without approval of the above ministry? Such kind of gross negligence, tampering with the rules and regulation, processing with the virtual inspection to online inspection, all this happening, and there were no approvals. Was the inspection process converted to an online system without the ministry's awareness? If the ministry was aware, why was this malpractice not detected and stopped earlier? If they didn't know, well, why didn't they know? And if they knew, why didn't they stop that? Were they a party to it? So these are the very pertinent questions which I think we should be asking them, and we need to know the correct answers for them. Will the CBI investigate the links of the named persons in the FIR with the BJP leadership? Will the CBI name BJP President JP Nadda, without whose involvement these massive scams couldn't have taken place? So it's up to the BJP now to see that they do the investigation in a fair manner, because the health ministry comes right under Mr. JP Nadda, and will they ensure that a fair investigation will take place? Will Prime Minister Modi now seek immediate resignation of JP Nadda from the post of Union Health Minister and the BJP President? Because Modi ji said, na khaunga, na khane dunga. But the matter is just the reverse. Khaunga or khane bhi dunga. Above all, Shri Nadda used to boast, ladies and gentlemen, you must have heard that very clearly most of the times, is to say that, we have increased medical seats in the country, and now the country knows that these medical seats were being
manufactured under fake medical colleges. So these are the questions, and today's concern was very, very important and serious. It is directly related to our students, to the people, to the parents who are keen to send their children to medical colleges or secure degrees and be competent enough to apply for jobs. And if this is the state of affairs, you can well imagine into what dirt we are entering. Now, if you want, I will do that in Hindi. जैसे मैंने कहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी की टैगलाइन रही है और बड़े जोर शोर से उन्होंने हमेशा ये बात रखी है, बट लगता है कि उनका अब ये कहना वाजिब होगा कि खाऊंगा भी और खिलाऊंगा भी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने व्यापम घोटाला की शुरुआत की, लगता है एक पायलट प्रोजेक्ट था, वो मध्य प्रदेश में था, उसके बाद पेपर लीक, रिक्रूटमेंट स्कैम्स, देश भर में ये चीज़ें इनके शासन में रही। अब वो एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं और अब तो मेडिकल कॉलेज तक उनके हाथ पहुंच चुके हैं। और किस तरह से फेक मेडिकल कॉलेजेस को परमिशन दी जाती है, नेक्सस जो फैला गया है, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, फैकल्टी जो कि परमानेंट होनी चाहिए वो टेम्पररी दिखाई जाती है, फेक फैकल्टी होती है, पेशेंट तक फेक मंगवाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं जाकि उनको अप्रूवल मिल जाए। और आपने देखा होगा बायोमेट्रिक का ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन जगहों पे, जो कि इन संस्थाओं को डायरेक्ट कभी कभी भेजी भी जाती है। तो बायोमेट्रिक जो लगाई गई है उसमें भी फेक फिंगरप्रिंट्स लगाने के बंदोबस्त किए गए हैं, बायोमेट्रिक को टैंपर कर दिया गया है। और ये सब जब होता है तो इंस्पेक्टर्स की मिली भगत होती है। जो इंस्पेक्टर्स आते हैं उनसे मिलके जो अपनी रिपोर्ट, कंप्लायंस रिपोर्ट देते हैं, कायदा ये कहता है कि जो रिपोर्ट होती है वो सीक्रेट होती है और वो सीक्रेट रिपोर्ट को उनको अपनी संस्था में जमा करना पड़ता है। उसके बाद अथॉरिटी परमिशन दे ना दे या कॉलेज को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपकी ये कमियां आप ये पूरी करिए। लेकिन यहाँ ये पाया गया कि रिपोर्ट जमा होने से पहले ही कॉलेजेस को पता लग जाता है कि उनकी क्या कमी है और वो फिर वो पूरी तो नहीं करते, लेकिन फेक तरीके से उसको पूरा किया जाता है क्योंकि उनको पता इंस्पेक्शन होगी, उनको टाइम भी पता लग जाता है और उसके हिसाब से वो फेक डॉक्टर्स को लाते हैं, पेशेंट्स को लाते हैं, तमाम वो चीज़ें करते हैं जाके उनको अप्रूव। और ये सब कोई चैरिटी में नहीं किया जाता, ये सब खूब सारे पैसे दिए जाते हैं ब्राइब के तौर पे। 3 से 5 करोड़ तक की सूचना है कि उनको दिए जाते हैं इस काम करने के लिए और फेक परमिशन पाने के लिए। बहुत से कॉलेजेस हैं जिसका नाम हमने लिया है और यहाँ पर पर्टिकुलरली बोलना ज़रूरी है कि डॉक्टर मीना, जो कि एक करियर में जब वो डॉक्टर थे रूरल प्राइमरी हेल्थ सेंटर में गुजरात में, उनको नरेंद्र मोदी जी ने अपने सीएम के तहत एक पोजीशन दी गई। उसके बाद उनको आयुष्मान भारत चलाने के लिए 2018 में प्रधानमंत्री जी ने उनको दिल्ली बुलाया गया और उसके बाद उनको अपॉइंटमेंट दी गई नेशनल मेडिकल कमीशन में, जिसके तहत जो कि वो मास्टरमाइंड रहे हैं ह्यूज स्कैम्स करने के लिए। और एफआईआर में ये भी पाया गया कि डॉक्टर मीना ने एक हनुमान मंदिर बना रहे हैं शायद सवाई माधोपुर राजस्थान में, जो कि ये सब करप्शन के पैसों से, और लगभग 75 लाख रुपए दिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को हवाला के तहत इस मंदिर को बनाने के लिए। और इसके अलावा 3 से 5 करोड़ तो पैसा एक्सचेंज होता ही था इस सब परमिशन देने के लिए। कुछ कॉलेजेस जो नोट किए गए हैं वो हैं इंडिक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर और उनके चेयरमैन सुरेश भदौरिया जी, जो बहुत से फ्रॉड केसेस में पाए गए हैं, जिसमें उन्होंने, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि टेम्पररी जो डॉक्टर्स हैं उनको परमानेंट फैकल्टी दिखा के उनको लिस्ट किया गया और फिंगरप्रिंट्स, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, सब वो काम किए हैं जाली उन्होंने अपने कॉलेज में, जिससे वो अपनी मान्यता अपनी कॉलेज में वो ला सकें। उसके अलावा बहुत से कॉलेजेस हैं इंडिया में जिसने स्कीम के तहत बेनिफिट किया, जैसे कि स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज, चंद्रशेखर मेडिकल कॉलेज बिहार,
NCR इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज मेरठ, श्यामला चंद्रशेखर कॉलेज जैसे मैंने बताया, इन सब कॉलेजेस ने इसके तहत फेक डॉक्यूमेंट्स और इंस्पेक्टर्स की मिली भगत के तहत अपने कॉलेजेस को रिकॉग्नाइज कराया और परमिशन इन संस्थाओं से ग्रांट की। और एक कॉलेज पर्टिकुलरली ये मेंशन करना ज़रूरी है, वो है रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रायपुर। ये भी एक तथाकथित महाराज रन करते हैं, रवि शंकर महाराज, और इनको कहा जाता है बाबा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बहुत क्लोज हैं। और इनके ऊपर एलिगेशन है कि इन्होंने गवर्नमेंट से नाजायज फायदा उठाया, उनको गवर्नमेंट स्कीम से बहुत से फायदे उठाए उन्होंने, रोड एक्सेस प्रोजेक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज, तमाम वो चीज़ें की इलीगल तहत, और अपने बाबा होने के नाते भारतीय जनता पार्टी से इन सब चीज़ों से इलीगल तरीके से फायदा उठाया। और यहाँ पर एक और चीज़ है एफआईआर में, जिसमें अतुल कुमार तिवारी का नाम है, ब्राइब्ड मयूर रावल, इन्होंने ब्राइब किया मयूर रावल को टू ऑब्टेन एडवांस इंफॉर्मेशन इंस्पेक्शन डेट्स के बारे में, कौन से इंस्पेक्टर्स किस जगह से आ रहे हैं, किस से, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, जाके वो पहले उनसे सेटिंग कर लें और तमाम अपनी चीज़ों को खाना पूर्ति से पूरी करें, जो कि उस संस्था उस कॉलेज में नहीं पाई गई है। इससे उनको ये फायदा मिला कि उन्होंने जब इंस्पेक्टर से बात कर ली, कायदा ये कहता है कि सरप्राइज इंस्पेक्शन होती है, यू आर नॉट सपोज टू बी नोइंग कि कब इंस्पेक्शन होगी और कौन से इंस्पेक्टर्स आएंगे, दैट्स द रूल। बट उसके अलावा क्योंकि उनके अंदर कमियां थी, चीज़ें नहीं थी, तो उन्होंने इलीगल तरीके से इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की कोशिश की कि कौन से इंस्पेक्टर्स आएंगे, कब डेट होगी, और इसके तहत पैसे और चीज़ें दी गई। सीबीआई ने 30 जून 2025 में जो एफआईआर की है उसमें 35 नाम दिए गए हैं, इंक्लूडिंग फ्रॉम द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, नेशनल मेडिकल कमीशन एंड प्राइवेट कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम एफआईआर में दिए गए हैं 2025 30 जून में जो सीबीआई ने दी है। बट हैरत ये होती है कि क्या यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री जेपी नड्डा, जिनके तहत ये मिनिस्ट्री चलती है, जिनके तहत ये सब संस्थाएं आती हैं, क्या वो जिम्मेवार नहीं है? क्या उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है? क्या वो जिम्मेवारी नहीं लेंगे, या आदत के जैसे बीजेपी की हैबिट है कि देख के भी अनदेखा करना और कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, क्योंकि इनको लगता है कि कुछ भी इनके राज्य में चल सकता है, इनके शासन में चल सकता है कि कुछ भी करप्शन करें, खिलवाड़ हो जाए मेडिकल कॉलेज के साथ या फार्मेसी के साथ, बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाए, लेकिन इनको आंच नहीं आएगी। क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं है? क्या सीबीआई इस पे प्रश्न नहीं पूछेगी? ऐसे ही फार्मेसी काउंसिल के मैंने आपके सामने कहा, उसमें भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें तो एफआईआर जो है डॉक्टर मोन्टू पटेल, जो कि पीसीआई के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने तो एक कदम आगे ही बढ़ के रेगुलेटरी बॉडी में ही घोटाले कर दिए और एक तरह से प्राइवेट क्लब हम कहेंगे, जैसे होता है ना प्राइवेट मेंबरशिप, मेरा ही ये क्लब है, मैं जो चाहे करूं, जिसको मैं परमिशन दूं ना दूं, सब रूल को अनदेखा करते हुए उन्होंने तो एक रैकेट ही चला दिया, जिसमें उन्होंने खूब सारे रिकॉग्निशन फार्मा कॉलेजेस को दिए। और सीबीआई ने पाया कि 23 ऐसे कॉलेजेस हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, जहां पर डॉक्टर पटेल के टेन्योर के तहत उनको परमिशन ग्रांट दी गई थी, जबकि उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, प्रिस्क्राइब परफॉर्म में उनकी बहुत सारी कमियां पाई गई। उसके बावजूद 23 ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि पूरे नेशन वाइड हैं, इस कंट्री में हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, जहां पर अप्रूवल दी गई है। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं किस टाइप का ये रैकेट ये चला रहे थे, और ठीक नेशनल यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के तहत ये सब काम हो रहे थे, क्योंकि ये ब्राइब्स चल रही थी।
अनदेखा अप्रूवल हो रही थी और कोई रोक टोक नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई पॉइंटर्स नहीं। 6 कॉलेजेस के नाम यह मेंशन करने जरूरी हैं। SSD कॉलेज ऑफ फार्मेसी, गगन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, शांति देवी जैन डिग्री कॉलेज, वीर शिवाजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, भगवती कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये सारे उत्तर प्रदेश में हैं, और हेवर्ड कॉलेज ऑफ फार्मेसी मध्य प्रदेश। ये सब अप्रूवल किए गए थे एग्जीक्यूटिव कमेटी हेल्ड बाय डॉक्टर पटेल, डिस्पाइट द फैक्ट कि इन सब में नेगेटिव रिपोर्ट्स थी। इन सब में कहा गया था इंस्पेक्टर्स के तहत कि इसमें चीजें पूरी नहीं है जिसके तहत इनको अप्रूवल मिलना चाहिए। उसके बावजूद इन कॉलेजेस को अप्रूवल दी गई थी। और एक कॉलेज तो खासकर यहाँ मेंशन करना जरूरी है, कॉलेज इन यूपी रन बाय विनोद कुमार तिवारी। इसमें तो कुछ ज्यादा ही लगता है जान पहचान होगी, क्योंकि इसमें ना तो बिल्डिंग है, ना कोई फैकल्टी थे, ना कोई विद्यार्थी थे। उसके बावजूद इस कॉलेज को अप्रूवल दी गई है। ये चलाया जा रहा है मिस्टर विनोद कुमार तिवारी। और इसमें ये कहा जाता है कि मिस्टर तिवारी ने 10 लाख इन कैश और 95,000 दिया बैंक ट्रांसफर के तहत संतोष कुमार झा को, जो एक प्राइमरी स्कूल टीचर हैं, जो ये मैनेज करते थे बिटवीन द फार्मेसी कॉलेज एंड बिटवीन द इंस्पेक्टर्स, जिससे वो फेक अप्रूवल देते थे। सीबीआई को वो कैंपस बिल्कुल ही झरझर हालत में पाया गया था। इट वॉज इन रुइंस, मतलब शैम्बल्स कंडीशन में था। एक टूटी हुई बिल्डिंग भी शायद नहीं थी, और उसके बावजूद भी पीसीआई ने उनको डी फार्मा कोर्स रन करने के लिए अप्रूवल दी गई। बहरहाल द एफआईआर ने साथ साथ ये भी पाया कि पीसीआई के इलेक्शन में खामियां थी। जब जो बॉडी रन कर रही है, जिसमें से मेंबर्स होते हैं, उसी में अगर खामियां होगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। बिफोर द इलेक्शन डॉक्टर पटेल उसने क्या किया, एक कनॉट प्लेस होटल बुक किया, जहां पर उसने 12 अपने मेंबर्स बुलाए, खाना पीना चला, और जिसमें खर्चा लगभग 2,11,000 दिए गए खाने में, और तमाम उस कंफर्ट देने के लिए जाकि वो उसकी वोट खरीद सकें और उसके बदले इन कॉलेजेस को फायदा वो दे सकें। सबसे जो बड़ी जो इशू यहाँ पर देखा पाया गया है कि 6 अप्रैल 2022 डॉक्टर पटेल ने क्या किया, उन्होंने अपने कुछ मेंबर्स को कोऑप्ट कर लिया की कमेटीज में, कोऑप्ट करके उन सब कमेटीज में डाला जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसके थ्रू अप्रूवल्स होते हैं। उन कमेटीज में अपने ही जानकारों को इन कमेटीज में डाला। उसमें कोई लीगैलिटीज नहीं देखी, कोई बायसेस, बिना सब अनदेखा करके। और उनको क्या दिया, उनको पावर क्या दी, उनको फुल ईयर पावर दी उन 6 अपने चुनिंदा लोगों को, जो कि इन फार्मेसी कॉलेजेस को अप्रूवल दे सके। और ये सब काउंसिल के रूल को बाईपास करते हुए दिया गया। ना वोटिंग की, ना डिस्कशन, और सेंट्रलाइज कंट्रोल पूरा का पूरा अपना इनर सर्कल में डॉक्टर ले आया, पटेल अपने हाथ में उन्होंने लिया, और इसके सिस्टम से उन्होंने अप्रूवल देना सबको शुरू किया। और इसके आगे वो एक कदम और आगे गए। 2023 आप सबको पता है, जब कॉलेज की इंस्पेक्शन होती है तो एक फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, तभी तो आप जाके देखेंगे कि बिल्डिंग है भी, या इसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वॉशरूम, टॉयलेट्स या रूम्स, डॉक्टर्स की फैसिलिटीज, या जो मशीन्स चाहिए रन करने के लिए, क्या वो है भी इनके अंदर। और ये एक लेट परफॉर्मा है, मतलब ये प्रिंट आउट है जिसके तहत आपको अप्रूवल होती है, कोई अनोखा नहीं है। सब जब भी अप्रूवल होती है आपके पास एक परफॉर्मा होता है जिसको आपको भरना होता है, उसमें बहुत सारी गाइडलाइंस और स्टेप्स होते हैं जो आप पूरा करेंगे तभी आपकी इंस्पेक्शन होती है। अब इन जनाब ने क्या किया, इन्होंने फिजिकल इंस्पेक्शन को ही स्क्रैप कर दिया। आप अब अंदाजा लगाइए, एक कॉलेज की इंस्पेक्शन दे रहे हैं जहां बच्चे पढ़ेंगे, अपना भविष्य आगे बढ़ेंगे, और ऐसी साइंटिफिक,
मतलब फार्मेसी भी पढ़ेंगे और आगे मेडिकल कॉलेज की भी तैयारी करेंगे, और उसमें आप फिजिकल इंस्पेक्शन को छोड़ के ऑनलाइन जूम इंस्पेक्शन, इसकी प्रक्रिया उन्होंने शुरू की। आपको जान के और भी हैरानी होगी कि जब जूम इंस्पेक्शन चलती थी तो कितने देर एक इंस्पेक्शन हो सकती है। एक पूरे कॉलेज को भी फार्मा कोर्स देने के अप्रूवल में पाया गया कि वो सिर्फ 7 से 9 मिनट तक जूम की मीटिंग हुई और खत्म, आपकी इंस्पेक्शन हो गई, और बिना इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, बिना पेपर्स चेक किए कॉलेज को अप्रूवल दे दी जाती थी। गूगल लिंक फॉर्म निकाला जाता है जिसके थ्रू एप्लीकेशन आती है, सब कॉलेजेस उसके थ्रू ही देते हैं। अब आपको कोई कोर्स चाहिए, और 908 एप्लीकेशंस आई थी, और जिसमें से 870 को इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया ऑनलाइन इंस्पेक्शन करने के लिए। और इससे आगे क्या ही कहें, डीजी फार्मा करके जो ऐप है, सॉफ्टवेयर, इसके थ्रू ये वेरिफिकेशन और चेकिंग होती है, उस सॉफ्टवेयर को भी टैम्पर कर दिया गया। 14 अक्टूबर 2022 उसका एक्सेस भी पीसीआई ऑफिशियल्स को ब्लॉक कर दिया गया, जबकि इंस्पेक्शन चल रही थी, अभी वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट भी नहीं हुए, लेकिन बाकी ऑफिसर्स के लिए वो उसको ब्लॉक कर दिया गया, ताकि वो मिस्टर पटेल अपने ही सिस्टम को देख सकें, अपने तहत अप्रूवल दे सकें, और पूरा का पूरा सिस्टम चोक कर दिया उन्होंने, और इंटरनल इंस्पेक्शन भी अपने हाथ और हर एक अप्रूवल अपने हाथ उन्होंने ली। ये सब चीज़ें पाई गई, इस लेवल तक करप्शन चला फार्मेसी में। अब कुछ सवाल हैं जो कि मैंने पहले इंग्लिश में पूछे, वो हिंदी में भी उनसे पूछना ज़रूरी है, और मुझे लगता है एज मीडिया पीपल आपकी ये बहुत इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है इस क्वेश्चन को रेज करना। ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये वो सवाल हैं जो हमारे बच्चों से, आपके बच्चे भी वहाँ पढ़ते होंगे, हमारे बच्चे भी ऐसे कॉलेजेस में जाएंगे। अगर इस तरह से खिलवाड़ किया जाएगा तो अब आगे वाली पीढ़ी क्या ही पढ़ के आएगी। महत्वपूर्ण प्रश्न, जब इस घोटाले में प्रधानमंत्री मोदी के करीबी व्यक्ति का नाम आता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या प्रधानमंत्री को इस व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट के बारे में पता है? भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी को उनके ही मंत्रालय में उनकी ही नाक के नीचे चल रहे करोड़ों रुपए की रिश्वतखोरी के मामले में जवाबदेही क्यों नहीं ठहराया जाता? क्या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इन घोटालों के पैमानों के बारे में पता नहीं था, या वह चुपचाप इसमें शामिल था? अनुमोदन और बायोमेट्रिक सिस्टम में इतनी बड़ी हेराफेरी ऊपर से मौन स्वीकृति के बिना कैसे हो सकता है? मंत्रालय की जानकारी के बिना निरीक्षण प्रक्रिया और ऑनलाइन सिस्टम में कैसे बदला गया? मतलब जब वो फिजिकल वेरिफिकेशन होता था तो ऑनलाइन में कैसे ये बदला गया? अगर मंत्रालय को जानकारी थी तो इस घोटाले का पता क्यों नहीं लगाया गया और इससे पहले क्यों नहीं रोका गया? क्या सीबीआई एफआईआर में नामजद लोगों का जो किया गया सीबीआई में कि भाजपा नेतृत्व से संबंधित की जांच करेगी? क्या सीबीआई भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का नाम लेगी? उनके इन्वॉल्वमेंट के बिना क्या ये बड़ा घोटाला नहीं हो सकता था? क्या प्रधानमंत्री मोदी अब केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष पद, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा अध्यक्ष पद से श्री जेपी नड्डा का तत्काल इस्तीफा मांगेंगे? ये सब सवाल हम पूछना चाहते हैं। खैर, जेपी नड्डा जी तो ने हमेशा ये कहा कि मेडिकल सीट हमारी कंट्री में बहुत बढ़ रही है और मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा हो रहा है। अब आप सबकी जानकारी में है कि वो किस तरह से मेडिकल सीट में
फेक मेडिकल कॉलेज देने में कितनी तत्परता दिखाई उन्होंने और किस तरह से अप्रूवल किया, ये सब आपके सामने है। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you.